right? That means 17/5/1982 chart, sir. 17/8/1982. Okay, sir. Right. So we'll discuss the same chart. Okay, sir. Okay, sir. Now is my chart visible? Yes, Yes, sir. sir. Is the chart visible? Yeah, sir. Okay. Visible, sir. Okay, okay. So this is the chart which has already been discussed in your class, right? Now, Sir. now this is the chart of a female. This is the chart of a female. The date of birth is 17/8/1982, and the given time is 1:10 a.m. Right? So Yes, sir. now we we are to do the BTR of this chart, and then we are to finally, you know, look at the event of marriage that has taken place. So, and we shall try to explain the event of marriage. Now, the time which you have already calculated last time, that was, I suppose, it was 109, if I am not wrong. Was it 109, Murthy ji? No, it is. What was the rectified time? 1946. Now that time is incorrect. Now the question is, that time which has been calculated is incorrect. Now the question is, why it is incorrect? What is the reason behind it? And why I'm saying like that the chart is the rectified time is incorrect. Now, even if I try to rectify this chart just by looking into the chart, because maybe that sometimes the data given in the books, that is not the correct. So my calculation for this chart regarding the exact rectified time for this chart is, initially what we need to do is, what I do is basically, I first of all try to rectify the chart by using the element theory. Now, what is this element theory is? It is Tattva Shodhana theory. And the unique concept behind this theory is that every human being that is born on the earth, it is constituted or has the characteristic of 5 tattvas, which are earth, water, fire, air, and then of course space. Now these 5 tattvas, they continuously keep on repeating in a cyclic order during the entire day, right? And basically, what is the meaning? What do I mean by saying that? Now these 5 tattvas which continuously keep on repeating is, now if you look at a particular day, say if I'm taking a particular day, let me say I take this date 17/8/1982. Now on 17th of August 1982, starting from the time of sunrise up to the next day of sunrise, do it mean that all the children which are born during this period, they will be of same sex? The answer is absolutely no. The answer is, you cannot have that anybody, any birth that is taking place on 17th of August, right, starting from the sunrise time up to the next day sunrise time, all the children born during the day, they are made. It is now either we get male or we get female, and during the entire span of the day, these
the male and females. Now, the birth of a particular child, whether the sex is going to be a male or female, that would be different. Now, how do we know this? So it was this theory, the Tattva theory, was propounded much earlier. And if you look at the book, your true horoscope, birth time rectification, which is given by Kullerji, then on page number 1920, he has given an idea to say around 3, 4, 5 theories which are used for the birth time rectification. And the ultimate theory for the birth time rectification, of course, is the cuspal interlink theory. Now then, what is the use of this Tattva Shodhana theory, and why I am particularly emphasizing on this point? Now, on the basis of the Tattva Shodhana theory, what is important is that at a particular time on a particular day, I can know whether the child that is born will be a male or will be a female. So, the sex of any child, whether male or female, an idea to this has been very cleverly given in the Tattva Shodhana theory. Now, according to this theory, we have 5 tattvas. Any human born on the earth is constituted or has the characteristic of these 5 tattvas, which are in the order. The order is earth, water, fire, air, and space. Earth, water, fire, air, and space. Now, each of these elements, they, after the sunrise time period, they run for a particular time. Say, for example, if I am taking the case of, let me say that on 17/8/1982, the sun rises at a time of 6 hours and 3 minutes. I am taking it for example. Now, if it is at 6 hours and 3 minutes, what does it mean? That at the start of sunrise, for the first 6 minutes, the element that governs will be the earth element. And after 6 minutes, for the next 12 minutes, it will be water element. For the next 18 minutes, it will be the fire element. And for the next one, it will be the air element. And for the next one, it will be space element. अब ऐसा करने से, what is the basic idea about it? Now you see that we have 7 days in a week, and the 7 days are starting from Monday right up to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Monday is a day that is governed by Moon. Tuesday, Mars. Wednesday, Mercury. Thursday, Jupiter. Friday, Venus. Saturday, Saturn. And Sunday is Sun. Now, if I classify these planets on the basis of these 5 elements, then Moon and Jupiter are watery elements. Similarly, Mars and Sun, they are fiery elements, fire elements. Mercury is earth element, Saturn is air element, and Jupiter is finally the space element. Now, on the basis of which element a child is born, we can decide the sex of that particular child. If the child is born during the period of watery elements, it has to be a female. If it is born during the fire elements, it has to be a male. Earth elements, again it has to be a male. Space elements, again it has to be a male. Right? So the 5 elements, which are earth, water, fire, air, and space, for earth element, which is governed by Mercury, it is male. Watery element is Moon and Venus. These are the 2 planets. One is on Monday, other is on Friday. It is a female. Fire element, it is
Mars and Sun. Mars is Tuesday, Sun is Sunday. It is male. For air element, it is female, and then again for space element, it is male. Any questions, please? Any questions? सर ये सीक्वेंस एक बार बता दीजिए. इसका सीक्वेंस जो है वो इसी सीक्वेंस में चलेगा, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस. यस सर. अर्थ का एलिमेंट जो है सनराइज से पहले 6 मिनट रहेगा. इसका मतलब अगर सपोज करो सनराइज 6 o'clock होता है, तो 6 o'clock से लेके 6 o'clock 6 मिनट्स तक जितने भी चाइल्ड बर्थ होगा वो सब मेल होंगे. 606 के बाद 60618 तक जितने भी चाइल्ड होंगे सब फीमेल होंगे. 6018 से लेके 6036 तक जितने भी चाइल्ड होंगे सब मेल होंगे. और फिर 7 o'clock तक, 36 से 7 o'clock तक 24 मिनट्स में जितने भी चाइल्ड होंगे सब फीमेल होंगे. एंड इन द लास्ट from 7 to 7:30 all the children which are born, they will be male. Again the same cycle is repeated. Now the repetition of the cycle takes place first in this particular order: earth, water, fire, air, space. This is moving from top to bottom, and the second part, the second half, that will be from space, air, fire, water and earth in the reverse order. It means starting from 7 o'clock up to 8 o'clock, all the children which are born, they would be male. From 8 to 8:24 again female. 8:24 to 8:42 they will again be male. 42 to 54 it will be female, and then 54 to 9 o'clock it will be male, and then from 9 to 9, 6 minutes past 9 it will be male. Now that is the particular sequence. Now if you just calculate the total time period of this sequence of earth, water, fire, air, space, it comes out to be 90 minutes. And this 90 minutes is half cycle. So the first 90 minutes is ascending order, the next 90 minutes is reverse order. It is, I'm sorry, not ascending, descending order, and the next one is again the reverse order. So one cycle of earth to space and space to earth, that comprises of 3 hours. Is it clear, please? जो कुछ मैंने कहा उसका मतलब क्या है कि हम अब ये जो चार्ट है हम लोगों के सामने रखा हुआ है, इस चार्ट में हम अगर इस चार्ट का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करें तो सबसे पहली बात जो हमें मालूम है कि ये चार्ट एक फीमेल का है. अब इस फीमेल का चार्ट है तो हम सिर्फ इस चार्ट को इस ढंग से लेके और जिस टाइम पे उसका बर्थ हुआ है, ये बर्थ का टाइम किसने दिया? डॉक्टर ने दिया. कब दिया? हॉस्पिटल में दिया. कहाँ से देख के दिया? अपनी घड़ी से देख के दिया या वॉल पे क्लॉक लगी है वहां से देख के दिया? हाउ डू वी नो दैट वट एवर टाइम हैज बीन गिवन बाय द डॉक्टर इज एब्सोल्युटली करेक्ट? बिकॉज ड्यूरिंग 80s, you know, nobody was much careful about the actual time of the birth of the child. Nowadays people, you know, they have come to know about astrology. People definitely, when the childbirth happens, they always ask the doctor कि what is the exact time period for the birth of child. और डॉक्टर्स को भी अब जो है एग्जैक्ट टाइम पीरियड नोट करना जो है वो शुरू कर दिया. बट स्टिल देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ 1 minute, 2 minutes or maybe 3 minutes, and sometimes it even exceeds beyond that. Now for the people who are born during 80s and 70s, the difference in the time period may be from say 5 minutes up to 25 minutes. So we cannot say with certainty. Now the question is how to check it. कैसे पता चलेगा कि जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है या टाइम जो है वो इनकरेक्ट है. अब इसी में ना बिफोर आई प्रोसीड ऑन विद द तत्वा थ्योरी टू एक्सप्लेन दैट व्हाई द टाइम पीरियड व्हिच यू हैव कैलकुलेटेड एज 10946 is incorrect.
I'll explain it on the base of Tattva theory, and then I'll give you the exact BTR, the exact time period that we are going to have for the birth of this particular native. Now look here. Now for this particular chart, if simply by looking into this time period, without bothering about the Tattva theory, what I will do is, I will just match some of the events. Now, the event was, if I remember it exactly, it was 5th of March. It was, if I am not wrong, 5th of March, the marriage happened. 5th of March, and the year was 2009. Okay. Now, these are the Dasha period lords which was operating at the time of the marriage, and on 5th of March, the timing is 12 o'clock. The Dasha period lords which were operating, they were Mercury Dasha, Mercury Bhukti, Rahu Antara, Venus Shukshma, and Mercury Prana. Right? Now the first part which is important to me is that first of all I'll see that the sub-lord of the ascendant is in relation with the moon star lord. So the moon star lord is Jupiter and the ascendant sub-lord is Venus. सर चार्ट दिखा दीजिए सर. हाँ जी, चार्ट दिखा दीजिए. चार्ट नहीं दिख रहा. हाँ, नहीं yes, दिख रहा. yes, sir. नहीं दिख रहा सर. चार्ट नहीं दिख रहा. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The chart is not visible. Okay. Now, is the chart visible? No. Not yet. So I'll have to. You have to share the chart. हाँ, मैंने करा शेयर उसको. नहीं, कुछ नहीं. स्क्रीन पे नहीं आया. अच्छा, स्क्रीन पे नहीं आया. ओके. नहीं आया चार्ट अभी. आया नहीं. ओके. So what we were talking here is that at this particular time period, the birth time that has been given, and for the marriage of this native on 5th of March 2009, the Dasha period lords were Mercury Dasha, Mercury Bhukti, Rahu Antara, Venus Sukshma, and Mercury Prana. Now, multi sound effects also is there. okay. Hanji, is it okay? Is there something wrong? Yes, sir. Okay. Now, the first important point is I will try to link the ascendant sub-lord with the moon star lord. Now, the moon star lord is Jupiter and the ascendant sub-lord is Venus. Jupiter is not linked to Venus, and Venus is linked to Jupiter only at sub level. Sir, voice clarity లేదు sir. है जी. हाँ, कहिए. सी. हाई क्लैरिटी है. क्लैरिटी है. हाँ. ओके. अब ये देखिए कि वीनस is linked to Jupiter at sub level. Now we should link Jupiter to Venus either at star lord level or at sub lord level. We never link Venus with Jupiter at the sub level. हम कभी भी जो है सबसे पहले हमारी, बिकॉज जब हम BTR स्टार्ट करते हैं तो BTR स्टार्ट करने के टाइम पे हमारी पहली कोशिश जो रहती है वो ये रहती है कि हम
या तो वीनस जुपिटर का रिलेशन स्टार लॉर्ड लेवल पे बने या सब लॉर्ड लेवल पे बने। सब लॉर्ड लेवल का रिलेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल वी आर श्योर कि अब सपोज करो कि हम बहुत टाइम पीछे चले जाएं या बहुत टाइम आगे चले जाएं और हमारा बीटीआर ना हो, देन ओनली इन दैट केस हम वीनस का रिलेशन जुपिटर के साथ सब लेवल पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वी डोंट एक्सेप्ट दिस रिलेशन। So, which means that Venus cannot be taken as the sub-sublord because it is not having any relation with Jupiter at the star level and at the sub-level. Is it clear? हाँ सर। Okay. अब अगर ऐसा है, then what are the sub-sublords that we can have for the ascendant? One is Jupiter. Now, Jupiter, no planet is in the star of Jupiter. Mercury is in the sub of Jupiter and Jupiter is in the sub of Jupiter. So the planets which can be the sub-sublord of the ascendant, one is Jupiter, other is Mercury, third is Jupiter, and the fourth planet that we can have is Rahu. Right? Rahu again represents Mercury. So we can have Mercury. It means we can have ascendant sub-sublord either Jupiter or Mercury, either of these two planets. So the option is very less with us. So the first part that I will do is I will set up the ascendant sub-sublord as Mercury. Right? Is it okay? Yes. Now, if I set up the ascendant sub-sublord as Mercury, now Mercury is in direct relation with Jupiter because Jupiter is in the sub of Mercury, right? And Jupiter is in the star of Rahu and Rahu is Mercury. So Mercury and Jupiter are strongly related to each other. They are strongly linked to each other. Now here, the second point which is important to me is that since this is the chart of a female and the ascendant rises in the sign Taurus, which is a female sign, female, and in the sign of female, and the arc is 99.99%. So I have to adjust the arc, and I can adjust the arc by changing the time in seconds so that I get an arc which is below 50%. Is it okay? So बहुत ज़्यादा बात करती है. I'll have to wait for a minute. Is it fine? So that is the probable time that I am likely to have. Now the arc is adjusted. There is a relation between the ascendant sub-sublord with the moon star lord. Now the third point I am to check up is the rule of 1710. And I believe that the rule of 1710, if I just check it, first I check the ascendant. It is Venus, Moon, Sun and Mercury. Venus is in 1, Venus is in 7, right? And then Venus is not present in 10. Since Venus does not have a PS, therefore I'll have to check it through its star lord and sublord. Saturn is present in 10 and Venus is present in 1 and 7.
So the rule is satisfied. Similarly, I can check it for Moon, Sun, Mercury. I have already checked it. And the rule of 1, 7 and 10, that is fully satisfied at this particular point. Is it okay, please? Now I need to check the marriage. For the marriage, the Bhukti Lord is very, very important. The Bhukti Lord is very, very important, and the Bhukti Lord is Mercury in the present case. So Mercury does not have a PS. Mercury is in the star of Venus, sub of Jupiter, and sub of Mercury. So Mercury itself is present in 5, 5 sign lord, 7 star lord, and 11 sub lord. 11 sub lord. Is it okay? So Mercury is in the star of Venus, and if you check Venus, Venus is there in 7. If you check Jupiter, Jupiter is there in 5. And if you check Mercury, Mercury is there in 5, 7 and 11. So the Bhukti Lord is very, very strong. And Bhukti Lord through Venus and Jupiter is giving a promise of 5, 7 and 11. And that is why the Bhukti Lord, yani the Dasha Lord is again repeated as a Bhukti Lord, because Mercury itself is giving a promise of 5, 7 and 11. So the Bhukti Lord in the present case at this particular time period is very, very strong. Now, if we proceed to the next Antara Lord, Rahu. Rahu is having a PS. Rahu is in Rahu star, Moon sub, and Sun sub. So Rahu itself is 5 sublord, 5 sub-sublord. Moon is there in 7. Moon is there in 7. Rahu is there in 5. Moon in 7. And Sun is nowhere in 5, 7 and 11. Sun has to be in 5, 7 and 11. Okay. Sun is not in 3, not in 5, not in 7, not in 9, not in 11. So I'll have to readjust this timing again. If I do it, so, yeah, look here, Sun is present in 3rd. It is okay. Sun here, Sun has got a PS and Sun is present in 3rd. So 3rd is a favorable cause, so it is okay. Rahu is there as 5th sub-sublord, Moon is there as 7th sublord, and Sun itself is posited in 3rd group, which is favorable cusp for the marriage. So this is okay. This is okay, right? And then we proceed to the Sukshma Lord, Venus. Venus is Saturn, Venus and Jupiter. Venus is Saturn, Venus and Jupiter. And if you look at Saturn, Saturn is there in 11, Venus is there in 7, Jupiter is there in 5 and 11. So the Sukshma Lord is okay. And now if you look at the Prana Lord, the Prana Lord on that day, now from the earlier time period, it has changed to Saturn. And Saturn here is in Mars star, Rahu sub, and Jupiter sub. Mars is there in 7, Rahu is in 5,
Jupiter is in 5 and 11. So even this is okay. Even this is okay. So the marriage, the event of marriage passes at this particular time, and now what it appears to us that what time we have calculated is absolutely 100% correct time, right? तो हमने जो अभी तक कैलकुलेट किया है उससे 1:09 187 मिली सेकेंड्स पे मैरिज का इवेंट पास हो जाता है। भुक्ति बहुत स्ट्रांग है, अंतरा बहुत स्ट्रांग है, सूक्ष्म बहुत स्ट्रांग है, प्राणा बहुत स्ट्रांग है। अब इसका अगर ट्रांजिट देखेंगे तो ट्रांजिट भी पास हो जाएगा। ना दी क्वेश्चन इज कि मैरिज का इवेंट पास हो गया, 1710 रूल पास हो गया, असेंडेंट सब लॉर्ड का कनेक्शन भी हो गया, लिंक भी हो गया मून के स्टार लॉर्ड से। अब जेनेटिक कनेक्शंस जो अगर हम चेक करें तो इसके जेनेटिक कनेक्शंस भी मूर्ति जी, इसका जेनेटिक कनेक्शन आपने बताया था मुझे कुछ। यस सर, यंगर सिस्टर। हाँ, यंगर सिस्टर का कौन सा था? पुनर्वसु। नो, उसमें प्लेनेट कौन सा? पुनर्वसु मीन्स जुपिटर। अब Yes. मरकरी, और यहाँ पे थर्ड का सब लॉर्ड मरकरी है। मरकरी का जुपिटर से रिलेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जेनेटिक कनेक्शन ओके। यस। थर्ड सब लॉर्ड इज मरकरी एंड the younger sister moon star is Jupiter, and Jupiter is related to Mercury. Mercury is related to Jupiter, and Jupiter is related to Mercury through Rahu. Okay, genetic connection is okay. So सब कुछ देखो, अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अब आप अगर इसी टाइम पीरियड को 1 hour 9 minute 46 seconds पे लेके जाओगे तब भी सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, ट्रांजिट भी पास हो जाएगा, राइट, मैरिज भी एक्सप्लेन हो जाएगी। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक रहेगा उसमें, वो क्या कि जुपिटर का जो रिलेशन है असेंडेंट सब लॉर्ड से वीक रिलेशन बनेगा सब लेवल के ऊपर, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट विद द बीटीआर। इज इट ओके प्लीज? नाउ आई कम टू द एक्चुअल पॉइंट कि मैंने जो बार बार ये बोला है कि ये टाइम पीरियड में ट्रांजिट मैच हो गया, 1710 रूल पास हो गया, जेनेटिक कनेक्शन पास हो गए, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, स्टिल आई एम सेइंग दैट दिस टाइम पीरियड that has been calculated is absolutely incorrect time period. The question is why? The reason is, now I will first of all have to justify that at this particular time period, the child that has to be born as per the Tattva theory should be a female. Does my calculation support that? Does this time period support that? अगर आप जो योर 2 हॉरोस्कोप में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जो बुक है खुलर साहब की, वो देखोगे तो उन्होंने 3-4 टेबल दिए हुए हैं वहां पे। In that table, when you look at this particular time period, you will see that the child that is born at this particular time period is a male, not a female, as per the Tattva theory. So, since the child born that is female and we are getting the result of male, so which means that this particular time period, that by applying the cuspal interlink theory which we has calculated is not the correct one. It is not the correct one. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, समटाइम्स तो what happens, sometimes when you calculate तो automatically वो correct हो जाता है, but most of the time if you omit this part you are likely to get an incorrect BTR, which would mean that you could have explained one event, maybe 2-3 other events cannot be explained. Maybe when you are predicting something at this particular time period, whatever results you are getting may not be the correct one. So thereby, in order to rectify the chart
for the birth time, the very first and important point, the prime point, what I do is that I first of all use the Tattva theory, the element theory, and on the basis of the element theory, I try to calculate the time period at which the native whosoever is born, if he is a male, should tally with the male element, and if it is a female, it has to tally with the female element. Now, how do I do this calculation? Look here, the very first point which is important, सबसे पहला काम. Now, the date of birth is 17/8/1982, day is Tuesday, and the time period, the birth time, that is 110. Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the time which I have calculated, right? Now this is the time period. Let me assume this time period. Okay, हमने जो कैलकुलेट किया अभी हम उसको लें, अदरवाइज एक्चुअल टाइम तो 110 है. ओके, ये टाइम है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सनराइज का टाइम क्या है. वी हैव टू नोट इट डाउन. सो द सन राइजेज एट 6:03:03. Is it okay? 6:03:03. But the time of birth is after 12 o'clock, and that time period is 1 hour 09 minutes 10 seconds as per the rectified time that I have calculated. अब सनराइज टू सनराइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सनराइज का टाइम है वो हमें कौन सी डेट का लेना पड़ेगा? 17th का नहीं लेना पड़ेगा. हमें कौन सी डेट का लेना पड़ेगा? 16th का लेना पड़ेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर. मैं रिपीट करता हूं. देखो, डेट ऑफ बर्थ 17/8/1982 है. ओके, टाइम ऑफ बर्थ 1:09:10. हमें ये मालूम है that 17th date will start after 12 o'clock. Am I right? Yes, Morning 6 to 12 and then 12 to 12. रात के 12 बजे तक 16th ही चलेगा. ओके, up to 12 o'clock at night our day will be 16/8/1982. Am I right? 12 बजे के बाद जो टाइम आएगा वो 17 का आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो सनराइज का टाइम है ये हम 17th का नहीं लेंगे. हम कौन से टाइम लेंगे? हम 16th का लेंगे. अब 16th का टाइम अगर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे? वी विल गो टू दी पंचांग. पंचांग में ईयर डालेंगे 1982, मंथ डालेंगे अगस्त और प्लेस डालेंगे हैदराबाद. अब ओके करेंगे तो व्हाट वी विल सी? We will see that on 16/8/1982, the day is Monday. We will note down the day. So the day is Monday. That is 1 point. And the sunrise time on that particular day is 6:02:57. Okay. Now we will not take this time 17 because sunrise, before the sunrise, if the birth time is before the sunrise on the other day, then we have to take the previous day and we have to take the day that will be Monday. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? तो हम अब यहाँ पे क्या लेंगे?
अब हम यहां पे लेंगे ना, लुक हियर, सनराइज टाइम हमारा 6:02:57 है और डे था हमारा मंडे। और मंडे को एलिमेंट जो है सनराइज के टाइम स्टार्ट होगा वो कौन सा आएगा, वाटरी एलिमेंट। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि मून इज मंडे इज वाटरी एलिमेंट, so Monday the sunrise time would start with the watery element first, then subsequently from watery element the next one will be fire, then air, then space, and in the last it will be earth again. Is it okay? This is how the cycle repeats. Sir, it is not showing Panchanga. है जी, क्लियर नहीं है? नो सर, ये वाला पहले एक रिमूव करना है, ये वाला कौन सा? चार्ट दिस इज नॉट विजिबल। अच्छा, ये वाला शेयर नहीं हुआ? मैंने शेयर हुआ है सर, ये वाला दूसरा चार्ट आ गया, प्लेस ऑफ Panchanga not visible, sir. पंचांग नॉट विजिबल? हाँ, ये Now it is visible, sir. ओके, मैंने वो शेयर नहीं किया था पंचांग ना, आई जस्ट फॉरगॉट टू शेयर इट। हाँ जी सर, प्लीज रिपीट इट सर। देखो क्या करते हैं आप, शुड आई स्पीक इन हिंदी? तो इंग्लिश में तो बात कर हाँ, दोनों में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ओके, आप देखो, शेयर नहीं हुआ तो पंचांग। पहले हिंदी में बोलता, पंचांग नहीं दिखा आपको तो पंचांग आपको मिलेगा, टूल्स में जाओ, पंचांग, अब दिखाई दे रहा है पंचांग? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये पंचांग का टेबल खुल जाएगा। अब पंचांग का टेबल खुल जाएगा तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे यहाँ पे ईयर एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। 1982 हो गया। यस सर। हाँ, अब 1982 तो हमारे पास मंथ कौन सा था, अगस्त। ओके। ओके, और हमारे पास प्लेस कौन सा था, हैदराबाद। यही था ना डेट, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ सर। ओके, हैदराबाद। तो हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अगस्त अप टू 31st ऑफ अगस्त सनराइज और सनसेट का टाइम आ जाएगा। इज इट क्लियर? सनराइज सनसेट का है यार। हाँ, सनराइज और सनसेट इंपॉर्टेंट है। यस सर। सनराइज का टाइम, अब हमने कौन सा डे देना है, 16th को, क्योंकि बर्थ टाइम क्या है, बर्थ टाइम है रात के 1:10। अब 1:10 को 12 बजे के बाद 17 तारीख शुरू हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 17 तारीख तो रात को 12 बजे शुरू हुआ, तो हमने तो सनराइज टाइम लेना है, इसका मतलब हमें 16 तारीख का सनराइज का टाइम लेना पड़ेगा, जो 6:02 और 57 सेकंड्स है। ओके, ओके। डे कौन सा हो गया, मंडे। ठीक है, डे मंडे हो गया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें डे देखना कौन सा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने सनराइज देखना है, और सनराइज कहाँ देखेंगे, टूल्स में जाएंगे, पंचांग में जाएंगे, ईयर एडजस्ट करेंगे, मंथ एडजस्ट करेंगे, प्लेस एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पे टेबल खुल जाएगा उस मंथ का, यहाँ पे सनराइज टाइम हमें पता चल जाएगा। ओके, ओके। अब ये हो गया, इतनी बात क्लियर। अब सनराइज टाइम के बाद अब हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। अब दिखाई दे रहा है मेरा ये नोटपैड, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। आप देखो, ये वाला नोट कैसे मिल जाएगा सर, ये वाला? क्या कह रहे हो आप? ये नोट्स कैसे मिल गया है? ये मैं आपको इसी में डाल दूंगा, मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, आई विल पुट इट डाउन। आप देखो, सनराइज का टाइम क्या था,
06/02/57. ओके। Yes, sir. और डे कौन सा था उस दिन? Monday. मंडे। तो डे है हमारे पास मंडे। मंडे जो है इसका प्लेनेट कौन सा है? मून। Moon. और मून कौन सा एलिमेंट है? Watery. वाटरी। तो Yes, sir. एलिमेंट स्टार्ट होगा जो उस दिन सनराइज के टाइम पे कौन सा होगा? एलिमेंट स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ sunrise, Sunrise. that will be watery element. Okay? Hmm. इसका मतलब हमारा साइकिल क्या बनेगा? साइकिल बनेगा। अब Water. हमारा ऑर्डर क्या था? हमारा ऑर्डर ये देखो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, यही था ना ऑर्डर? हाँ सर. हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? वाटर से। Water. तो वाटर के बाद क्या आएगा? फायर, Fire. Fire. फिर एयर, फिर स्पेस, Space. फिर अर्थ। Yes, sir. इसी ऑर्डर में चलेंगे। ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं करना। वी हैव टू प्रोसीड इन द सेम ऑर्डर। ओके। Yes, sir. सो नाउ द साइकिल विल स्टार्ट फ्रॉम वाटर एंड विल कंप्लीट एट अर्थ, राइट? Yes, sir. Yes. फ्रॉम वाटर टू अर्थ हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? 6. Oh, water fire, sir. From water to earth how many minutes are there? 90 minutes. See, water 12 minutes, fire 18 minutes, air Yes. 24 minutes, space Yes, 30 sir. minutes, earth 6 Okay. minutes. Total is 90 minutes. सर रुक दीजिए सर, नोट कर देगा. हाँ कर लो आप नोट कर लो। रुक दो. हाँ आप नोट कर लो इसको। हाँ. आप नोट कर लो, ये ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने। ये यहाँ से नोट कर लो, मून से। इन द मीन टाइम आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। आप नोट कर लो इसको यहाँ तक। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं। टाइम ऑफ सनराइज, डे ऑन बर्थ टू डिसाइड द स्टार्टिंग एलिमेंट। ओके। मेल. ओके. दूसरा Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Space, Mercury, space, May, हाँ जी, नोट कर लिया सबने? जस्ट मिनट. हाँ कर लो। नहीं तो इसको मैं आपके उस पे डाल दूंगा, नेट पे डाल ठीक दूंगा। है सर, हो गया. कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा मैं इसको। ओके सर. Okay. करिए. Screenshot. ठीक है। ठीक है सर. अब ये देखो, अब हम एक्चुअल पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे कि हमने ये क्यों कहा, व्हाई डिड आई से दैट दिस टाइम which I have calculated at which all the events they have matched, it's an incorrect time. Now our cycle starts from water to earth. I have written here water to earth 90 minutes. Yes sir. And then it will be from earth to water, that is earth, space, air, water, fire and water. Reverse order, पहले लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा, फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा। इज इट ओके? वन कंप्लीट साइकिल ऑफ दीज एलिमेंट्स इज फर्स्ट इन द फॉरवर्ड मैनर, secondly in the reverse manner. So we started from water, then to fire, then to air, then to space, then to earth. It took 90 minutes. Okay? So we have decided that in these 90 minutes, what will be the sex of the children which are born? Right?
Now, after the 90 minutes are over, the next half of the cycle will proceed from earth to space to air to fire to water. So I have written water to earth and then earth to water. 90 minutes and 90 minutes, and the total of these 90 and 90 minutes is 180. 3 hours. 180. 180 means 3 hours. 3 hours. So it means that one cycle, that is of how many hours? 3 hours. Is it clear? So one cycle is of 3 hours, right? Now the next question is that starting from 6:02:57, starting from this time period up to 01:10:00, how much time has elapsed? कितना टाइम पीरियड सुबह 6 बजे से लेके रात के 1 बजे तक सुबह 6 बजे हाँ म्यूट कर लो भाई Sir, 18 hours, 12 cycles complete. आप देखो क्या है, हमने क्या करना है 6:02:57 से to the actual time of birth which is 1:10, how much time period has elapsed? So the time period that elapsed is from 6 to 12 noon, 6 hours, right? First of all, it will be from 6 to 12 noon. Then it will be from 12 noon to 12 at night, right? हाँ हाँ प्लीज इसको म्यूट कर लो. మేడం నల్లాన్ పద్మావతి మేడం గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం. సార్ పద్మావతి మేడం మీరు మ్యూట్ చేయండి. हाँ जी okay. So morning 6 o'clock up to 12 noon 6 hours, then 12 noon to 12 at night 12 hours. So the total number of hours will be how much? 18 hours. Am I right? Plus 110, yani 19 hours and 10 minutes. So from 6 o'clock in the morning up to 1:10, it will be 19 hours, approximately 8 minutes. Okay. Now what I have done is I have added 18 here. Why did I add 18 here? Because each cycle is of 3 hours and it would mean 6 cycles. मैंने सुबह 6 बजे से लेके 1:10 रात के जो मेरा टोटल टाइम पीरियड है कैलकुलेट किया है वो 19 आवर्स और 7 मिनट्स एंड 3 सेकंड्स है. 6:02:57 up to 1:10, it will be 19 hours. सर 19 आवर्स कैसा हुआ सर? ये वाला 6 to 6 to 12. देखो के दोपहर के रात के 12 बजे तक कितने आवर्स हो गए? 6 hours. 12 आवर्स मैम. हाँ टोटल 12 hours. 12 आवर्स हो गए. तो ये क्या बच गया? रात का 12 बच गया. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 hour और 10 minutes. तो कितना टाइम हो गया? 19 hours. 19 hours.
और 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। एम आई राइट? हाँ जी, ठीक है ये। सर ओके, अब मैंने क्या किया इसमें, मैंने 18 आवर्स ऐड किए हैं, क्योंकि इन 18 आवर्स वुड मीन 6 कंप्लीट साइकिल्स। और 6 कंप्लीट साइकिल क्या है? वाटर टू अर्थ टू वाटर, वन साइकिल। सर 6 complete cycles means forward and reverse, forward and reverse. हाँ, फॉरवर्ड, हाँ करेक्ट, ये 6 Yes, sir. साइकिल। हाँ. 6 साइकिल मैंने ऐड किया, 18 ऐड किया, तो मेरे पास टाइम क्या आ गया? मेरे पास टाइम आ गया 12:02:57 एट नाइट, रात के 12:02 और 57 सेकेंड्स। एम आई राइट? अब यहां पे हमारा साइकिल कौन सा कंप्लीट हुआ? अर्थ टू वाटर, यानी वाटर पे हमने कंप्लीट किया। 6 साइकिल अर्थ टू वाटर पे कंप्लीट होंगे। वाटर टू अर्थ हाफ साइकिल, अर्थ टू वाटर 1 साइकिल हो गया, फिर वाटर टू अर्थ 1.5 हो गया, फिर अर्थ टू वाटर 2 साइकिल्स हो गए, एंड सिमिलरली द 6th साइकिल वुड कंप्लीट टू वाटर, यानी रिवर्स ऑर्डर वाला साइकिल जब चलेगा तो 6 साइकिल पूरे हो जाएंगे। तो 6 साइकिल का एडिशन करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 02:57, यानी इट इज 12:02:57 which I have taken at 00:02:57. Is it okay? अब वाटर को जब हम स्टार्ट करेंगे, वाटर से ही अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, क्योंकि वाटर, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ इज द नेक्स्ट साइकिल ऑफ 90 मिनट्स, दैट इज 1.5 आवर। अगर मैं इसमें 1.5 आवर ऐड कर दूंगा तो मेरा टाइम पीरियड जो है वो 1:01:10 से एक्सीड कर जाएगा। अगर मैं 1 hour 30 मिनट्स इसमें ऐड कर दूं, यानी इस टाइम पीरियड में 1 hour 30 मिनट्स ऐड कर दूं, तो मेरे पास टाइम पीरियड हो जाएगा 01:32:57। लेकिन मेरा बर्थ टाइम गिवन क्या है? बर्थ टाइम गिवन इज 01:10। एम आई राइट? हाँ जी, ठीक है इतना? यस सर। ओके, सर अब हम वाटर से ही स्टार्ट करेंगे। वाटर का टाइम पीरियड क्या था? 12 मिनट्स। यस सर। हम 12 मिनट्स ऐड करेंगे तो ये 14:57 हो गया। यस सर। तो वाटर के टाइम पीरियड में जो चाइल्ड पैदा होंगे, जो चाइल्ड बर्थ होगा, जिनका, उनका सेक्स क्या होगा? दे विल बी ऑल फीमेल्स। इसका मतलब Yes, sir. रात को 12:02:57 से लेके 12:14:57 तक जितने भी चाइल्ड बर्थ होंगे सब फीमेल होंगी, कोई भी मेल नहीं होगा उसमें। Yes, sir. ओके, उसके बाद अब ये टाइम पीरियड तो टैली नहीं करता ना मेरा 1:10 से, क्योंकि ये टाइम पीरियड 14:57 है। It has much difference from the actual time of birth. So I again proceed to the next one, that is fire element, 18 minutes, it becomes 32:57. Still it is much short of this time period. Then I add air element, 24 minutes, and that comes out to be 56:57, which is close to this time period. Okay, अब अगर एयर एलिमेंट के 24 मिनट्स ऐड करता हूं तो मुझे मालूम है दैट द सेक्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन विच विल बी बोर्न फ्रॉम 12:32:57 up to 12:56:57, they will be all females, right? Yes, sir. Okay, अब एयर के बाद जब मैं स्पेस ऐड करूंगा तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 01:26:57, और स्पेस पीरियड में कौन से चाइल्ड बर्थ होंगे? सब मेल होंगे। ओके, अब यहां देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे पास टाइम पीरियड क्या आया कि अगर 12:32:57 से 12:56:57 टाइम पीरियड लेता हूं मैं, तो all the children which are born during this time period, they will be females. अगर इसके बाद का टाइम लेता हूं 56:57 onwards, तो स्पेस के 30 मिनट्स ऐड करूंगा तो ये 1:26:57 बन जाएगा, which is how many minutes ahead of this time period? 16 minutes 57 seconds.
Now, does it appear to be okay? Answer is absolutely not. इतना टाइम पीरियड फर्क नहीं हो सकता कि डॉक्टर ने बताया 1:10 और हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सा 56:57 से 1:26:57, तो इतना टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, स्पेस एलिमेंट जब ऑपरेट करेगा तो सारे चिल्ड्रन जो बॉर्न होंगे उस टाइम दे विल बी ऑल मेल्स। हमारा जो चार्ट है वो किसका है? फीमेल का चार्ट है। अगर फीमेल का चार्ट है तो इट मीन्स कि हमारा जो एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ है दैट शुड बी फ्रॉम 12:32:57 अप टू 12:56:57। इज इट क्लियर? सर यस सर इतनी बात क्लियर है? यस सर, यस सर। इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 10910 187, इस टाइम पीरियड में कौन सा एलिमेंट ऑपरेट कर रहा है? स्पेस। स्पेस मीन मेल। हाँ, इस टाइम पीरियड में कौन सा ऑपरेट कर रहा है? 56:57 के बाद कौन सा ऑपरेट करेगा? स्पेस। और Yes, स्पेस में क्या होगा? मेल। तो ये जो टाइम पीरियड मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बीटीआर जो मैंने किया है, तो इस बर्थ टाइम के ऊपर मेल होना चाहिए। द सेक्स ऑफ द नेटिव शुड बी मेल, but on the contrary I am talking about the chart of a female, which means whatever time period that I have calculated over here is absolutely incorrect time period, although all the events or whatever events I was calculating, I was doing it, they all matched at this particular time period. हाँ जी, बात समझ में आ गई? Oh my God. हाँ, yes, this is yes. sir. हाँ, यही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब मैं बीटीआर किसी का देखता हूं तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करके बता देता हूं कि आपका बीटीआर ठीक है या गलत है। सर ये तत्व कैलकुलेशंस कहाँ मिलेंगे सर? ये आपको मैं दे दूंगा, आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। I will write down and I'll give it to you. All the children born at this particular time period, they are to be male. I am talking here and discussing the chart of a female. So by no means a female is likely to born after 12:56:57. That is why the time period which I have calculated here does not matches with the sex of the child, and hence the time period is incorrect. क्लियर हुई बात? ये टाइम पीरियड क्यों गलत है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट। Sir, हाँ जी, बोलिए। नाउ आस्क क्वेश्चंस, देन आई विल प्रोसीड अहेड। sir, it is okay. In this particular period 12:32:57 up to 12:56:57, so if you look at the difference, how many minutes? 24 minutes difference. Now further calculations are done by using the अंतर तत्व एलिमेंट। अब दो पार्ट हैं इसके। पहले तो तत्व आएंगे, जैसे हमारे पास हम जब डिस्कस करते हैं कस्पलिंग, पहले क्या आता है? स्टार लॉर्ड आता है, फिर सब लॉर्ड आता है, फिर सब लॉर्ड में सब लॉर्ड आता है। यहाँ पे क्या आएगा? पहले तत्व आएगा, फिर अंतर तत्व आएगा, फिर अंतर तत्व आएगा। इट इज राइट अप टू सब लेवल। इज इट क्लियर? अब हमारा टाइम पीरियड जो है 0:32:57 से स्टार्ट होके 00:56:57, that should be the approximate time period where all children born, they are female, and since it's a chart of the female, which means that the birth time of this native, this particular female, falls between 12:32:57 up to 12:56:57. Now the question is how to calculate it further, because the difference here is 24 minutes. That's a big difference. Here then what we do is we apply the concept of antar tattva. I have written over here. It is antar tattva concept. Now what is antar tattva concept? It is the same idea. अब हमारे पास यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था? हमारे पास यहाँ पे अंतर तत्व जो है, now what is the point we completed at? It was air. यस सर। एयर के बाद क्या आएगा? 5 रिवर्स ऑर्डर ना? नहीं,
एयर के आगे क्या आएगा ना, स्पेस आएगा। Space. Yes, sir. Yes, sir. स्पेस के बाद क्या आएगा? अर्थ आएगा सर, Earth. अर्थ आएगा। अर्थ के बाद क्या आएगा? Water. वाटर आएगा। और वाटर के बाद क्या आएगा? Fire. फायर आएगा। राइट। तो हमारे पास अब, बिकॉज अंतर तत्व के अंदर ही सी तत्व के अंदर, यानी द एलिमेंट इज एयर, within the element air you have antar tattva, which means within the element air again you have all the 5 tattvas. So antar tattva air will have all the 5 tattvas, which will be starting from air to space to earth to water and to fire. Is it okay? Idea is same, concept is same, nothing, no change at all. इतना बात क्लियर है? Yes, sir. अब सर हमारे पास टाइम पीरियड क्या था? 30 to 57. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे 32 से। हम स्टार्ट करेंगे 32 से 00 32 57। और एलिमेंट पहला कौन सा स्टार्ट होगा? अंतर तत्व पहला कौन सा स्टार्ट होगा? Air. एयर में सबसे पहले एयर स्टार्ट होगा। अब एयर का अंतर तत्व है, तो एयर का टाइम पीरियड कितना है हमारे पास? 24. 24 minutes. 24 मिनट। 24. 24 मिनट्स को हमने फर्दर डिवाइड करना है। 24 मिनट्स को हमने फर्दर डिवाइड करना है इन 5 एलिमेंट्स के अंदर। एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर एंड फायर, दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर दिस 24 मिनट्स। इंटू 24/90। नो, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये? हाउ डू वी कैलकुलेट इट? जो एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर और फायर है, इनका रेशियो क्या है? इफ यू लुक हियर, टोटल 90 hours। the time period 15:6. 6, 12, 18, 24, 30. It means the ratio will be 1, 1:2. 1:2, 1:3. 3, 1:4. 4, 1:5. 5. Yes, sir. Right? And now what is the total? 5, 4, 9, 3, 12 to 14, 15. So total is टोटल 9 सर। 15. 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 and 1, 15. Okay? टोटल 15 है ना? Yes, sir. सर अब टोटल 15 है, तो हमने अंतर तत्व 24 मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एयर का क्या रेशियो था वहां पर? 24 minutes. अब हम अर्थ ले लेते हैं। हम अर्थ ले लेते हैं। अर्थ का रेशियो क्या था? अर्थ था 1 था ना? Yes, sir. Yes, sir. और कितने में था ये रेशियो? 15 सर। 1/15। 1/15, 1 divided by 15। यस सर। और कितने मिनट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है? 90. 24, 90 नहीं, 24 मिनट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना ना। 24 Okay, sir. 24/15. 24। ओके, सो इट इज 24/15। और 24/15 का अगर रेशियो कैलकुलेट करोगे आप 24/15 का, तो ये 0.8 आ जाएगा। 1.6. नहीं 1.6 आएगा। Yes, sir. 24/15, 1.6. एक मिनट, लेट मी डू द कैलकुलेशंस। Yes, sir. 24 1.6. divided by 15, that is 1.6। मिनट्स Yes, सर। sir. मिनट्स।
1.6 मिनट्स आ जाएगा। ओके, Yes, sir. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थ का क्या आ जाएगा, अर्थ का आ जाएगा हमारे पास Sir, in air from we have to take from air onwards. Air is let us space again. मैं आई जस्ट एक्सप्लेन दिस पॉइंट। अब देखो 24 मिनट्स है हमारे पास ये टाइम पीरियड, सो 1/15 24 is how much? 6 1.6 minutes, minutes, sir. which means equal to how much? 1 minute, and 6 into 60 is 24 Seconds. seconds, right? 1 minute, Yes, sir. 1 minute 24 seconds. Is it okay? Yes, sir. अब ये देखो 1.86 मिनट्स हैं, तो अंतर तत्वा में क्या होगा? पहले चलेगा अंतर तत्वा में, No. पहले मूव होगा फॉरवर्ड, और फिर क्या होगा? Reverse. फिर होगा ये रिवर्स। ठीक है, अब Yes, हमारे पास अर्थ का कितना टाइम आया? 1.6, एम आई राइट? sir. तो फॉरवर्ड में कितना जाएगा? 0.8। सर यही सर 0.8 मिनट जाएगा फॉरवर्ड, और रिवर्स में कितना जाएगा? 0.8, और टोटल क्या हो गया? 1.6। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now, just as Tatwas, the element theory में we have discussed that first we have to move in the forward direction, then in the reverse order. 90 minutes forward, 90 minutes backward. Now, what is the total time period for the air element that we have with us? That is 24 minutes. So it means 12 minutes will be in the forward direction and 12 minutes will be in the backward direction. Am I right? अब इफ अर्थ का जो है हमारे पास 0.8 है, तो वाटर का कितना आएगा? 1:2. अर्थ स्पेस now what is the time period we calculated for Air, sir. Air 24 minutes. 0.8? 0.8, am I right? Yes, sir. Yes. 0.8 is ratio 1. Water will be how much? 1.6. 2 ratio. Yes, sir. Yes, sir. Fire will be how much? 3 ratio. 3 ratio. 2.4. 2.4. 2.4. Yes, sir. Air will be how much? 3.2. Air 1.4, 2, 3.2. 3.2. And what about space? Space 5 ratio. 4. 4. 4. 4. Yes, sir. And now if you calculate this total, what is the total here? 3.2. 12 minutes. Plus 0.8. Yes, sir. 12 minutes. 12 मिनट्स हो गया। Yes, sir. अब ये अंतर तत्व भी उसी ढंग से मूव करेगा। Now should I proceed further? So when we start from 00:32:57, this is the time, right? Sir. तो पहले कौन सा अंतर तत्व आएगा? एयर का अंतर तत्व। एयर का अंतर तत्व कितना टाइम पीरियड है? 3.2. 3.2. 3.2 का मतलब क्या हो गया? 3.2. 03 and 12. Am I right? Yes, sir. यही बनेगा ना? Yes, Yes, sir.
Yes, sir. 36 point. तो ये क्या बना हमारे पास 0 0 36. 35 ना 36 Yes, sir. 36 and here 09. it will be 09. 09, sir. 09. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now the next element after the air element is Space element, sir. space. Space 4 में point. time period 4 minutes. 4 minutes. Yes, sir. 400. So 40.09. 40.09, sir. Yes. Zero nine. Okay. Now Next the year. next element, because Earth. next element is Earth. 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 What is the time period for Earth? 08 minutes, sir. 0.8. 0.8 minutes means how much? 48 seconds. 48. Yes, sir. Ah. 48 seconds, sir. Yes, sir. 48 seconds. 48. 00. 57. 40, 57, sir. 40 So minutes, 57 seconds. This 40 means minutes, 57 seconds, sir. 40 minutes and this is 57. 57. 57. Next element in order is Next, water, sir. water. Yes, sir. Water element means Water element means 1.6 minutes. Water 1.6. So 1.6 means 1.6 means 1.36 seconds. 36 seconds. 36 seconds. Yes, sir. So this will come 42 minutes. This will be 42 minutes, 33 seconds, sir. this will 42 be minutes, 33 seconds. 42 minutes. 33 seconds. This is 80 and 93. So 33. 33, sir. 33 seconds. Next, Now, fire. after water, it is fire. Yes, sir. Fire means 2.4. 2.4 minutes, 2.24 seconds. 24 seconds. 24 seconds. Yes, sir. This is 44, 57, sir. 44, 57. 57. Okay. Yes, sir. Now, Yes, sir. after this, Again, air. reverse cycle, because this time period is again much short of 56, 57. Am I right? Yes, yes, sir. So we have to move in the reverse order. In the reverse order, first it will be fire. We have moved from air to fire. Yes, sir. Now it will be from fire to air. Yes. Right? So Yeah. the first element will be fire. 2.4. Fire will be 0 to 24. 2.4. 0 0. This is 40, 44 and 45. No, I'm sorry. This Yes, is sir. 40, 47. 40, 20, 21. It is 81, 81, 21. 21, sir. Okay. After fire again it will be water. Sir, actually we have to divide that 24 minutes only, na, sir. Why you are 24 minutes. 24? Why you are going at 47 minutes? What is the need of it, sir? We have to finish up it before, sir. No. Try to get this point. The question is ki here in these Antar Tatwas, fire, earth and air
Fire, earth and space, they are male. Air and water are female. Now Okay, sir. we have to go close to the time of birth. See, it is not like this. हमारा time of birth तो 1 hour 10 minutes है. We have to go close to that particular time period. Now that particular time period we found that it is incorrect. Why it is incorrect? Because the time period in which the birth is to fall, that has to be from 12:30 to 57 to 12:56 57. Now Yes, sir. we have to approach the time which is closer to 56 57. We already classed, sir. Huh? I think we already classed VC. Sign means how much time? This is Water is in 1.6 minutes, sir. 1.6. 0136. So this is 57. 46, 57, sir. Cannot happen in watery sign because it will give a female. Am I right? Yes, हो ही नहीं sir. सकता. We proceed Yes, sir. on to the next one. Next is which one? Fiery. After Earth. Earth. Oh, reverse you are coming. Yes, sir. 08 means Earth is 48 seconds. 48. 0048. So 48, 49, 49, 45, sir. 49, 45. 00, and here it is 49, 49, 45. 45. Yes, sir. Right. Next after Earth is space. Yes, sir. 4 minutes. 4 minutes, sir. 53, 45. సార్ ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్. పైన మనము వాటర్ సైన్ కి 1.6 53. 53. 50. 12:53. Sir. Hey, just a moment. Let me complete it first. 12:53 to 12:56 57. It means the time of birth of the native with this chart should fall between 12:53:45 to 12:56:53. So we have come close to around 3 minutes time period. So the actual time period, the time of birth has to be in this particular range. Now your questions. देखो एयर साइन कहाँ से स्टार्ट हुआ? 12:53:45 से. कहाँ कंप्लीट हुआ? 12:56:57 से. Yes, sir. हमने क्या कैलकुलेट किया? 12:30 to 57 to 12:56:57. So our time period is close to this particular time period, and in this particular time period, starting from 12:53:45 to 12:56:57, all the children which are born, they will be females. Thereby, the rectified time for this chart should be between 12:53:45 to 12:56:57. Any questions? बहुत ज्यादा गैप है. Is it okay? ओके सर. Any questions? बहुत ज्यादा गैप हो गया सर. टाइम कहाँ गैप हुआ? 12:56 है. हाँ, वो क्या गैप है? ये जो आपने बुक में से लिया हुआ, taken from the book, that is incorrect, or it's a misprint. I believe that is incorrect. If it is 1:01:01, then this is very close to 01:01. Am I right? Sir. Look at this time period, 01:01, and look at this time period. This is close to this, 4-5 minutes error. And in 80s, I suppose that there used to be a difference of 5 to 10 minutes. So this is okay. Nothing wrong with it. Nothing wrong with it. Now, what will be the exact time period? That we need to calculate. यहाँ पे exact time period क्या होगा? यहाँ तक clear है सबको? Is it clear up to this point? Yes, sir. Any questions? Any questions? No, sir. Sure?
Yes, sir. is that the time period is 0101, again it is okay. Now I can't say because in the books there are misprints. See, I am an author of many books. When I write the book, there are certain sometimes typical errors. The errors while printing, sometimes even when we are looking to it, तो वो mistake हो जाता है. So I believe there is some kind of mistake because I have applied this theory to a number of charts for which I do the BTR, and they are all absolutely correct, absolutely fine. अब आप बताइए, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? Is it clear to everybody? Yes, sir. पहले तत्व थ्योरी फॉलो करना चाहिए. हाँ जी, तत्व थ्योरी फॉलो हाँ करना है पहले. हाँ, ये जरूरी है. आपने चेक करना आपका चार्ट करेक्ट. स्टॉप प्रेजेंटिंग और शुड आई कीप दी स्क्रीन? Okay, sir, you can stop, sir. बताइए. ओके, Small doubt, sir. आप बताइए. 10 पे भी पास हो जाएगा, 19 पे भी पास हो जाएगा, 1946 पे भी पास हो जाएगा, 1910 पे भी पास हो जाएगा. इसको 19 पे ले आओ तो भी पास हो जाएगा, राइट? बिकॉज एक ही इवेंट है मैरिज का. लेकिन इस चार्ट से हम अगर कोई और इवेंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे. वी शैल फेल टू एक्सप्लेन द इवेंट्स. So whenever you do BTR, always see this Tattva theory is a way to recheck if whatever you have done, that is correct or that is incorrect. And that is possible only if you know this theory. नोट्स रख दीजिए सर. हाँ, नोट्स मिल जाएंगे आपको. मैं बना के ना आपको मैंने इसमें जो डाले हुए हैं कॉपी करके उसमें डाल दूंगा. ठीक है सर. So you get an idea about it. Sir, actually, हाँ जी. Of a female, it is the chart of male. And if it is the chart of male, then the time of 110, 19 is okay. Absolutely right, nothing wrong with it. So the first doubt in my mind is that whether it is the chart of male or is the chart of female. And are you very sure that there is no misprint? I believe there is a misprint. If it is the chart of male, it is absolutely right, nothing wrong. Then time period which you have calculated is 1 hour 9 minutes. That is absolutely right, nothing wrong with it. 1 hour 9 minutes 10 seconds. That is the correct time period for it. If it is the chart of male, that time period is okay. But if it is the chart of female, then I have two doubts in my mind. Doubt number one, that is the time period which is reported in the book, that is 0110. It could have been 0101. There is mistake in writing the zero before and 0 after. Sometimes this kind of mistake does happen. रीचेक नहीं ना करता. यस सर. इवन खुल्लर जी की बुक्स में ऐसी मिस्टेक्स हैं. yes, sir. तो इसीलिए दो सीरियस पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में. पहला टाइम पीरियड, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इज इट एब्सोल्युटली 100% एरर फ्री? आई डाउट, इट इज नॉट. नंबर टू, इंस्टेड ऑफ फीमेल it is male, then it is okay. Then nothing wrong with it. Now your question. Sir, space tattva is 30 minutes duration. That out of 30 minutes, so many people will, so many children will be born, but all male means it also. नहीं सर, उसमें अभी मैंने और डिटेल्स आपके साथ डिस्कस नहीं की बिकॉज ऑफ टाइम. तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि तत्व में अंतर तत्व आएगा, अंतर तत्व में अंतर तत्व आएगा. कितना है सर? हाँ, 3 आएंगे और तीनों में मेल आना चाहिए. अगर मेल है तो तीनों में मेल आना चाहिए, तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकल आएगा. सर वो 3 आएगा, 5 आएगा सर. हाँ, 5 आएगा, 3 आएगा क्या? नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि पहले तत्व आएगा, फिर अंतर तत्व आएगा, फिर अंतर तत्व आएगा. सर ये
Sir, day wise हाँ earth and water is ये बताए ना sir. हाँ देखो जो Sunday to Saturday, please हाँ one more time. संडे टू सैटरडे ओके Sunday to Saturday, earth sign, water sign, air sign बताए ना. ओके Begins. Day begins. Sunday begins with this thing. And Monday, water sign, of course. Yes, అదే రవి Usually fiery sign. इज Fire माय is चार्ट विजिबल not visible. चार्ट शेयर करो सर हाँ मैं शेयर అదే कर रहा हूँ అదే సూర్యోదయం నుంచి ఏ గ్రహం ఓరా ఉంటే ఆ ఫైర్ సైన్ నుంచి ఆ సైన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ ఏ ఇప్పుడు సండే అనుకోండి రవివారం కాబట్టి రవి ఫైర్ Fire. సైన్ కాబట్టి ఫైర్ సైన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అంతే. Monday water. మండే వాటర్ మూన్ Tuesday, sir. Tuesday fire. కాబట్టి ఫైర్ సైన్ ఫైర్. Fire. Wednesday earth. వెన్స్డే ఎర్త్, థర్స్డే Space. Space. Friday, ఫ్రైడే Friday వాటర్. water. ఆ ప్లానెట్ బట్టి इज माय चार्ट विजिबल Yes sir. visible, sir. Yes, sir. Saturday or sir? నాగమల్లేశ్వరరావు Airy, గారు airy. Airy. And Tuesday, sir? now look here Tuesday, I have fire. written here kindly look at the screen కుదిరి కదా ఫైర్. Okay. శంకర్రావు గారు Sir, శంకర్రావు గారు sir, sir. నాగమల్లేశ్వరరావు అండ్ శంకర్రావు యూ Ah. ప్లీజ్ రెఫర్ పేజ్ నంబర్ 22 YTH. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ రిటర్న్ ఇన్ ఇట్. Okay, sir. Okay, sir. hello now can you see my screen Yes sir. Okay, sir. sir. Okay, sir. okay now look here we have 7 days Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday right Yes, yes, now what are the planet distribution for these days Monday is for moon Hmm. yes, okay Tuesday is for Mars yes, Wednesday for Mercury yes, Thursday for Jupiter yes, Friday for Venus yes, Saturday for Saturn yes, and Sunday for Sun. We have 7 planets and all the 7 are there. yes, sir. Okay. Now Oh. Moon and Venus, they are watery signs, Sir. right? They are watery planets, Moon and Venus. Oh, okay, sir. Mars and Sun, they are fiery planets, fire signs. Okay, okay, sir. Mercury is Earth, Jupiter is space, and Saturn is air. Okay, sir. See, to survive on Earth, air is required. So Saturn is must, Sir. right? Sun is Not at all. required, 5. So the body is made up of 5 elements. Pancha Tatwas. हाँ जी Sir. शेर हाँ जी हाँ जी सर Noted, sir. जी सर हाँ जी वन को पूछिए पूछिए completed birth time is rectified now. Yes. Up to it is 0, 56, 57. Is it okay? ओके सर ओके Is it okay? हाँ जी सर ओके Huh? हाँ ओके How, sir? देखो आप चेक करो Sir, हाँ जी one thing, sir, there is a rule. जी Promise of younger cusp, younger co-born, promise of हाँ younger co-born बोल को हाँ हाँ एक रूल है. हाँ क्या है उसमें? A person gets a younger co-born जी when the sub-lord of the ascendant is linked जी to its star lord, जी with third cusp. करेक्ट You see, now we have got Jupiter. यस Ascendant cusp sub-lord is Jupiter. करेक्ट Jupiter should be linked with third cusp. जी तो लिंक Jupiter. है ना सर देखो मार्स राहु के स्टार में है जुपिटर भी राहु के स्टार में है लिंक है ना No, sir. Jupiter, sir, ascendant. What the rule says, ascendant cusp sub-lord Jupiter. Jupiter should be Jupiter. Jupiter is in the star of Rahu. Jupiter is in the star of Rahu, Mars is in the star of Rahu.
They are linked to each other. No, sir. Third cusp, sir, rule a person gets a younger co-born when the subsublord of the ascendant is linked through its star lord with the third cusp. हाँ थर्ड कस्प से टैली करना हाँ कैसा होता थर्ड कस्प में? जुपिटर थर्ड क्लास सर नहीं, ascendant subsublord Jupiter जुपिटर हाँ सैटर्न should be linked to the third cusp through its star lord. थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड थ्रू जुपिटर का स्टार लॉर्ड राहु है. राहु ओके. और राहु जो है मरकरी है. थर्ड कस्प में होना ना थर्ड कस्प. हाँ हाँ थर्ड कस्प कोरुलस का है मून सैटर्न मून मार्स. हाँ यहाँ राहु होना चाहिए या मरकरी होना चाहिए. जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ राहु. राहु और मर्क्यूरी. करेक्ट सर. इसको पीछे ले जाएंगे तो मार्स को थोड़ा सा इसको जरा देखना वो. हाँ ये चेक करना पड़ेगा. ये चेक करना पड़ेगा. थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा इसमें. इट मे बी माइनर सम माइनर. हाँ माइनर चेंज. अब हमारा सेकंड टाइम पीरियड क्या था हमारा 53. व्हाट वाज द टाइम? 53 45 सर. 53:45. Yes. 53:45. Yes. Hmm. 53:45 में सैटर्न आएगा सब लॉर्ड. तो सैटर्न जुपिटर से लिंक नहीं होगा. Saturn is not linked to Jupiter. Okay. We will change the ascendant subsublord from Saturn to Mercury. Saturn to Ketu. Mercury is not there. Mercury is not there. Jupiter, Saturn. They are not related to each other. Third place Saturn. It is not related. नहीं रिलेटेड नहीं है. मर्क्यूरी भी नहीं रहता ना. रिलेटेड नहीं है. इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. जरा देखेंगे. हाँ इसको देखना पड़ेगा सर. Sir, we can see later on. Yes, definitely I'll do it. Because now the time is 10:35. Yeah. Okay, we will do it. I'll do it. I'll just. This is important. You have raised. सर కొద్దిగా రూల్ చెప్పండి సార్ మూర్తి సార్. మూర్తి సార్ రూల్ చెప్పండి సార్. అయ్యో మనం 190 సార్లు డిస్కస్ చేసినాంలేండి మూర్తి గారు. కొత్తదే కాదు ఇది మీరు మర్చిపోయినారంటే. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ న్యూ వన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఓల్డ్. This is given in the book. This is very old one. This is given in the book that they should somehow directly or indirectly be related to each other. Through the star lord है ना. तो Jupiter through his star lord Rahu should be linked to third cusp. चलो देखते हैं मूर्ति जी इसको. ओके सर. इस पॉइंट को देखते हैं. जीवीआर मूर्ति. yes sir. YTH లో 269 చూడు. అలాగే సార్. ఓకే సార్. ये पॉइंट चेक करते हैं सर. इस पॉइंट को चेक करना पड़ेगा. माइनर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर. माइनर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. बाद में देखेंगे. माइनर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. जरा टाइम देखना जरा. हाँ इसको आगे पीछे देखा तो बैठता. आगे देखो इसको अगर. बिकॉज इस टाइम पीरियड में भी जब हम लेते हैं ना मूर्ति जी. विथिन दिस पीरियड वी हैव टू. आयनामशा चेंज कर देंगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा.
नहीं सर, नाम से वी हैव टू फॉलो कुलर। हाँ, अब क्या है जो उन्होंने रूल लिया है ना बुक के अंदर, बुक में आप टेबल देखोगे, योर ट्रू हॉरोस्कोप में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में टेबल दिया हुआ है, टेबल ए टेबल बी, ओके। उसमें देखोगे तो उन्होंने नेट टाइम पीरियड ही दिया हुआ है इसका, उन्होंने नेट टाइम पीरियड दिया। अब उसने क्या किया, उन्होंने कृष्णा मूर्ति पद्धति की वॉल्यूम 1 पेज नंबर 278 इफ आई एम राइट, उसमें दिया हुआ है ये तत्व थ्योरी का भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कुलर जी ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है, कृष्णा मूर्ति पद्धति वॉल्यूम 1 पेज 278, तो उन्होंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है। और उस रेफरेंस में अब कृष्णा मूर्ति पद्धति का जो अयनांशा है वो डिफरेंट है कुलर आवरली से, कुलर आवरली से। व्हाट डू आई मीन टू से दैट कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें 2-3 मिनट आगे और 2-3 मिनट पीछे हो सकता है, अयनांशा के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इवन कुलर जी ने भी छोड़ दिया। रीजन क्या था उसका, क्योंकि अयनांशा बदलेंगे तो ये सनराइज का टाइम पीरियड बदल जाता है एंड दैट कैन चेंज अप टू 3 मिनट्स, दैट कैन चेंज अप टू 3 मिनट्स। अब जैसे हमने 56 लिया, 57, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये 59 भी हो सकता है और 53 भी हो सकता है। बट दिस इज ए वे यू नो हाउ यू कैन रीचेक कि आपने जो किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब इसमें देखो थर्ड में अगर हम लेके आए, थर्ड में अगर हम ये वर्क नहीं कर रहा, ये ओपन कस्प सेटिंग टूल वर्क नहीं कर रहा। मार्स को राहु में चेंज करना है, कुछ सेकंड्स का ही फर्क पड़ेगा, बिकॉज देखो आप अगर इधर 71 पे है, बहुत कम सेकंड्स का फर्क पड़ेगा सर। अभी आया सर। ये देखो राहु आ गया 57.2 पे, यू गेट माई पॉइंट। हमारा 56-57 था, ये 57.02 पे आ गया, तो आपका पॉइंट भी ओके हो गया, रेक्टिफिकेशन भी हो गया। हाँ जी ठीक है, इज इट फाइन सर? यस, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ना सर, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे मार्स था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा उस पे था। मार्स को हटाकर राहु को लाया। हाँ, अब इसमें अगर चेंज करेंगे तो जुपिटर में हमें क्या प्रॉब्लम आएगा, ये आर्क सेटिस्फाई नहीं होगा। कम करेंगे, कम करेंगे। हाँ, ये आराम से करते हैं इसको, कम करेंगे। हाँ, इसको अगर मैं 54, 53, 591 पे करूं, 54, 53, 591, मूर्ति जी इसको आराम से देखते हैं, ये भी नहीं होगा सेट। ओके सर, बिकॉज हाँ, इसको चेक करते हैं, चेक करते हैं। इस पॉइंट को सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं एक्सप्लेन हो रहा, वो चेक करते हैं। ओके वील चेक इट, आई चेक इट, ओके सर, आई चेक इट। एनी मोर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड सर? कुछ और पूछना तो बोलो। नो,
हाँ जी सर, तो गुड नाइट बोले सबको। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। Sorry, sir. बहुत देर हुआ आपको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों के बाद बैठे हैं आज तो। इट इज आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, Okay. ऑलमोस्ट 1 month, है ना? సార్ మూర్తి సార్ ఏదో YTH తత్వ థియరీ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి సార్. పేజ్ నెంబర్ ఏం సార్? 22. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ठीक है सर, Okay, okay. राइट सर, Okay, फिर राइट सर, गुड नाइट टू एवरीबॉडी, Thank you, Sir, sir. गुड नाइट Good टू night. एवरीबॉडी, गुड नाइट जी, गुड नाइट टू Good एवरीबॉडी। night, thank sir. you, sir. Thank you very much, sir. Right Thank you sir, very much. right I जी, have taken जी much pains and right explained everything, sir. जी We are जी, very I've tried appreciative my with best that. to explain, I've Yes, tried my best to explain, sir. right जी, And good night, further, one more time, we will have our class, sir, in future. definitely definitely, After some time. yes yeah, definitely, Okay, sir. Thank you, sir. okay Thank जी, you very much. okay, thank you everybody, thank you everybody, right sir, right।